Hello. Do you identify? Can you identify these kind of words? What are they? Can you judge why might have I written these words? What would be the topic of today's lecture? Okay. These are subordinating conjunctions. अब ये subordinating conjunctions मेरे क्या काम के, मैं ये क्यों स्टडी कर रही हूँ? अब subordinating conjunctions आपके कंटेंट को थोड़ा सही तरह से मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो आपके IELTS के राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल है। हेल्पफुल मतलब सिर्फ आपको आइडिया कन्वे ही करने के लिए नहीं, लेकिन करेक्टली कन्वे करने के लिए। दूसरा, जब आप इन कंजंक्शंस को यूज़ करते हो तो एक प्रॉपर फ्लो जनरेट होता है आपके कंटेंट में, चाहे आप स्पीकिंग करें या आप राइटिंग करें। लेट अस सी हाउ डू दीज कंजंक्शंस वर्क। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ और I would like you guys to connect those sentences. Subordinating conjunctions सिर्फ इतने ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं। मैंने उनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हैं so that मैं आपको समझा सकूँ कि ये हमारे लिए IELTS की जर्नी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। Okay, so here I have 5 sentences and each of them is having 2 sentences. Go ahead, give it a try. Try connecting the 2 sentences with the options given above. First, understand the relationship between these 2 sentences and depending on them, pick the correct option. Let us see. She was listening to songs, full stop. I was making her painting. क्या लगता है कौन सा कंजंक्शन आएगा? She was listening to songs. वो गाना सुन रही थी. Full stop. मैं उसकी पेंटिंग बना रही थी. Do you feel कि दोनों ही एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली चल रही थी? अगर मैं ऐसा कहूँ तो चलेगा कि वो गाना सुन रही थी इसलिए मैं उसकी पेंटिंग बना रही थी, या वो गाना सुन रही थी सिंस मैं उसकी पेंटिंग बना रही थी। नो, अगर मैंने ये कंजंक्शंस लिखे तो मैं जो कन्वे करना चाहती हूँ वो कन्वे नहीं होगा। The message, the idea won't be exactly conveyed that I have thought of. So, because I feel when I read these sentences, these 2 sentences, I felt that both these activities were simultaneously going, and so I think that she was listening to songs. I can say while I was making her painting. So I picked while over there. So, hello. What did I exactly do? Did I make complex sentence? Did I just make complex sentence? Can you do this? Can you really do this? Do you think that making complex sentences is that difficult? Now, for us, now I don't think so. You'll have the same perception कि नहीं, complex sentence बनाना मुझे नहीं आता है या difficult है। थोड़ा और इसको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आज हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत पक्के से आ जाए। चलो सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। The child was smiling, he was happy. वो स्माइल कर रहा था, वो खुश था। क्या लगता है कौन सा कंजंक्शन आएगा? Can I say child was smiling while he was happy? Child was smiling although he was happy.
या child was smiling क्योंकि, because he was happy. So can I say because? Yes, absolutely. So this is again, we have just created the complex sentence. Let's check the third one. Or you can pause the video quickly. Make this sentence the complex now. Try it by yourself. Okay, let's make it. The doctor was new to us. He understood our case. क्या लगता है दोनों ही सेंटेंसेस थोड़े से मैच नहीं करते. डॉक्टर नया था, फिर भी वो हमारा केस इजीली समझ गया. सो व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन अप्रोप्रिएट होगा? कैन आई राइट बिकॉज ओवर हियर? कैन आई राइट व्हाइल? कैन आई टेक इफ? नो, एब्सोल्युटली नॉट. यस, सो आई कैन से दैट हियर आई कैन ऐड although. Yes, exactly. Although the doctor was new to us, I'll have a comma here and this will be small h. So although the doctor was new to us, he understood our case easily. So now you're getting slowly and gradually, you're getting the grip over complex sentences, don't you think? Let's check the fourth one. I reached home. I will make tea for myself. So do you think that this sentence will actually fit into a conjunction? Do you think any of the conjunctions would fit here? Do you think? Just check. I reached home and I will make tea for myself. Now I would like you to understand the errors that a person makes while connecting two sentences. If you closely observe, do you even think that these two sentences can be combined? Why? See, here I have used past tense और यहाँ पे मेरे पास है future tense. दोनों में से एक भी सेंटेंस मैच नहीं करता है, ना दोनों के टेंस जेल करते हैं. So this sentence cannot be connected. Okay, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सारे ही सही दूंगी. Okay, so you have to pick कि क्या दो sentences connect हो सकते हैं. Simply you just don't have to read the sentence, put the connector and then you are done. No, be aware, be alert. Okay, let's see the second. तो okay, before going further, क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है जब मैं कोई दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करती हूँ? सबसे पहले तो मेरी आइडियाज़ कैसे फ्लो कर रही है. कनेक्टर्स मुझे हेल्प करते हैं दो आइडियाज़ को या सिचुएशंस को मीनिंगफुली कनेक्ट करने के लिए. अगर मैं दो आइडियाज़, ऐसे तो एक ही आइडिया है, लेकिन अगर उसके बीच में फुल स्टॉप डाल के मैं उनको दो सेंटेंसेस में स्प्लिट कर दूँ तो आइडिया में मिसकम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है. तो ये कंजंक्शंस एक्चुअली मुझे हेल्प करते हैं मेरी ही आइडिया करेक्टली कन्वे करने के लिए. लेकिन इस जर्नी में अगर मैं भूल जाऊं कि मैंने क्या टेंसेस यूज़ किए हैं, तो स्टिल दो आई एम कनेक्टिंग द सेंटेंस विद द कनेक्टर और विद द कंजंक्शन, I may end up creating miscommunication. Let us see the fifth one. Teacher did not leave Raju. Oops. क्यों? He told the truth. अगर राजू ने ट्रूथ बोल दिया होता तो टीचर उसको क्यों पकड़ के रखती, क्यों उसको जाने नहीं देती? मतलब
कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे आएगा? टीचर डिड नॉट लीव राजू जब तक उसने सच नहीं बोला. सो टीचर डिड नॉट लीव राजू अनलेस he told the truth. Yes. Did you get it? Fine. So just today we have cleared our conception towards complex sentences, towards how to make complex sentence. And today I would advise you guys to go ahead, try few sentences, write them separately, have a close look at what you are thinking, how your ideas are flowing. अपने आइडियाज़ के ऊपर आप वर्क कीजिए, और जैसे जैसे आपके आइडियाज़ आते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो आप उन्हें लिखिए और ट्राई करिए वो आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए, जिससे आपको आज के ही दिन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना परफेक्टली आ जाएगा.